The 18th Pravasi Bharatiya Divas convention kicked off in Odisha's capital Bhubaneswar on Wednesday, with over 5,000 delegates from India and abroad expected to attend the three-day event. The convention began with the inauguration of the Youth Pravasi Bharatiya Divas by External Affairs Minister S. Jaishankar, Youth Affairs and Sports Minister Mansukh Mandviya, and Chief Minister Mohan Charan Manjhi. Now you all know that it is customary to hold a conclave of our younger generation as part of the PBD celebrations. The thinking behind that is one of recognizing the special contribution that young minds make at home and abroad. And indeed, in connecting them more effectively for mutual good. आज हिंदुस्तान एक ऐसा देश है दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है। 20 में से 13 इंडियन सिटीजन युवा है जिसकी एज बिलो 35 है और सारे देश की एवरेज एज 29 ईयर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। Security has been beefed up across the state capital for the three-day convention. Around 2,700 police personnel along with 1,200 Central Forces personnel will be deployed in Bhubaneswar for security and traffic management. Delegates coming from various countries said that the event provides them with a unique opportunity to reconnect with their culture and heritage. Pravasi Bharatiya Divas is a prestigious event for all Pravasi Bharatiyas because we got an opportunity to visit different states every 2 years, and we got an opportunity to know India more closer because we are out from India since I am out from the last 15 years. So there is a lots of changes in the country. It's the second generation, third generation of India after me is here. So it's good initiative to interact with the new young guys. It's good initiative to see the development. It's good initiative to meet the PM, to meet the EM, and discuss how the NRIs can help to develop India. इस तरह का प्रवासी भारतीय दिवस जो लगता है, जो कई वर्षों से अपने भारत से जो है बाहर चले गए हैं, वो अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा मंच है जिसमें उनको अवसर प्रदान होता है, और ये सिर्फ यही अवसर नहीं है कि वो जुड़ें, उसके अलावा वो अपनी धर्म, संस्कृति, व्यापार, फिर भाषा को लेकर जो जुड़ते हैं, और इससे कई स्किल्स जो हैं बाहर आते हैं, वो इस मंच का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। The state government has lined up several programs for the delegates attending the convention. Among them is a music festival, an international Odissi dance festival, a food festival and an Adivasi Mela. यहाँ पर हमने महाप्रभु जगन्नाथ जी के ये लाइफ साइज स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। उनके साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का स्कल्पचर बनाए हैं, जय जगन्नाथ करके लिखे हैं, क्योंकि ये जो प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ही कंसेप्ट है कि उड़ीसा में ये प्रवासी भारतीय दिवस मना जाए, और इसलिए उन्होंने बहुत सारे जगह में सब लोगों को इनवाइट किए थे कि आप उड़ीसा आइए और यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा उसको देखिए, उड़ीसा का कला, संस्कृति और महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए। Prime Minister Narendra Modi will take part in the inaugural session on Thursday, while President Draupadi Murmu will preside over the valedictory session on Friday. Murmu will also confer the Pravasi Bharatiya Samman upon members of the Indian diaspora to recognize their achievements in various fields. Trinidad and Tobago President Christine Carla Kangalu is the chief guest of this edition, which is being held on the theme Diaspora's Contribution to a Viksit Bharat. She will address the convention virtually. The last edition of the annual convention was held in Indore in Madhya Pradesh.